I think we can start. Mr. Amit, if you're ready, we can start. Yes, Ashwin, we can start. Sure. Pavitra, you can take it ahead. All right. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us here today. I'm Beverly Menezes, your host. This webinar will cover a very interesting topic, which is dollar index at 100 and crude oil at 100. Is it going to be a reality soon? We have with us Mr. Amit Pabari, founder and managing director at CR Forex Advisors. Mr. Pabari, we thank you for joining us here today to share your insights with our audience. A warm welcome and thank you to all our viewers on Zoom, YouTube, and LinkedIn for joining us here today. Before we move forward, I'd like to give you all a brief introduction about DRII Capital. DRII Capital is a global trade finance company offering post-shipment collateral-free financing to MSME exporters in India. DRII works with over 1,500 sellers and 900 plus buyers spread across 80 plus countries. We have financed over $1.5 billion worth of international trade since DRII's inception in 2016. To know more about DRII Capital and to receive a call back from us, kindly fill the form shared in the chat section right now. A note for the audience, during the webinar, you can make a note of your questions. All your questions will be addressed at the end of the webinar. You will have the opportunity to raise your hand and speak directly with Mr. Pabari. So, without any further delay, let's dive into today's session. Today, we will have an insightful session where we will be discussing two significant crises that are currently gripping the exporter community. One, rising container costs, and two, the impact of soaring energy prices. With the crude oil prices swinging upwards at an all-time high, exporters are curious to understand which way the oil prices will move now and the impact that this will have on Forex. Crude has gained more than 60% this year as the rollout of COVID-19 vaccines have lifted movement curves and subsequently oil demand. An energy crisis is gripping major economies with no sign of easing, even as major oil producers remain firm on restrained supplies. At the same time, OPEC and its allies have signaled only slow production increases to the global market after severely cutting output in the early stages of the pandemic. Meanwhile, a severe container shortage has been pushing container rates, which shot up to record levels in the last 10-15 days, triggered by massive congestion at Chinese ports that are either closed or operating at low capacity, along with a huge demand for containers in the US and Europe. So, what does this mean for Indian exporters? Are these high prices going to be a new reality soon? To answer all these questions and to help you understand the impact of rising crude prices and container costs, we have with us today Mr. Amit Pabari. Being a finance maniac and a Forex devotee for over 1.5 decades, Mr. Pabari founded CR Forex to synergize his zeal for the Forex market, which is the largest financial market in the world. He holds the highest level of education in financial risk management, that is Financial Risk Manager, FRM, by the Global Association of Risk Professionals, GARP US, and a master's in finance from ICFAI. He is well sought by various media houses like CNBC, Bloomberg, Money Control, Financial Express, and more for his opinions on Forex and the financial markets. We are grateful that he has joined us here today to share his insights about the Forex market and the impact of these rising container and energy prices on exporters. I now request Mr. Pabari to address our viewers. Mr. Pabari, over to you, please. Thank you, Beverly. Thank you. Thank you, audience, for making this event happen. Thank you, DRII Capital. Before I start, I will, say two things. I will try to keep the presentation as simple as possible. And during the presentation, we'll be sharing some key insightful, data points with you, which can help you to manage your foreign currency risks in a much better way. So let us start today's presentation. Here we go. My screen is visible to the audience? Yes, Mr. Pabari, we can see it. Right. So in today's presentation, we'll be covering 4 things. The first thing is, what is the outlook on dollar index and what is the outlook on Euro USD and GBP USD. Second, we'll be covering what is the outlook on oil, crude oil, and what its impact on USD INR pair.
Third, we'll be covering view on USD INR. Fourth, what is the strategy for exporter and importer? And finally, there will be a Q&A round. Any questions, if you have, you can write it down at the end of the presentation. We'll be happy to help you with that. So, let us see, let us start with the first part of the presentation. At what is the outlook on dollar index? Before we start, what is the outlook on dollar index? Let me explain you what is dollar index. Dollar index is nothing but an index which measures the strength of dollar against other currency. जैसे निफ्टी होता है, निफ्टी measures the strength of Indian equity market. Indian equity market कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसी तरह डॉलर इंडेक्स measures the strength of dollar against other currencies. So इंडेक्स के अंदर भी 6 करेंसीज है, 3 बड़े करेंसीज है जिनका वेट ज्यादा है, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड. तो डॉलर इंडेक्स जब ऊपर जाता है तब क्या होता है? Few months back, I came to a television show, and then one of my client called me, "Yeah, Amit, you come and say that dollar index will move to 89 to 94 levels. If that happens, what impact it will have on my euro export ka receivable, and what impact it will have on my dollar ka receivable?" So because of that, I have put that slide just to explain that if the dollar index move from 89 to 94, जो recently अभी हुआ भी है last 3 महीने पे, then euro USD pair will go down, GBP USD pair will go down. Euro has fallen from 1.18 level to 1.16 level. Pound has fallen from 1.38 level to 1.34 level, and dollar rupee shoot up from 73 to 75 levels. Now, when dollar index moves, कब dollar index bullish होता है, let us understand that. So dollar index दो टाइम पे bullish होता है. एक, when the US economy is doing extremely well, at that point of time, dollar index will move higher. Second, during global economic crisis, जैसे last year कोविड का क्राइसिस था, 2008 में सब प्राइम क्राइसिस था, तो जब भी क्राइसिस आता है तब डॉलर इंडेक्स मूव होते हैं. डॉलर इंडेक्स क्राइसिस के टाइम पे क्यों ऊपर जाता है? उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन इज दैट डॉलर को हम लोग सेफ हेवन मानते हैं. सो व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस, पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम डिफरेंट एसेट क्लास टू डॉलर. इक्विटी से पैसा निकाल के डॉलर पे जाएगा, कमोडिटी से पैसा निकाल के डॉलर पे जाएगा. तो व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस ग्लोबली, तब डॉलर ऊपर जाएगा. और दूसरा, when US economy is doing extremely good. Now let us understand US economy कैसा कर रहा है. Before doing that, let us take a poll. Let me launch the poll. Poll ऐसा है, where will dollar index move in next 1 year from current level of 93? पोल इज अ फैंटास्टिक थिंग. आप लोग पोलिंग करेंगे, आप लोग वोट करेंगे, तब तक हम लोग का एक ब्रेक हो जाता है. Mr. Amit, if you can just read out the question for our YouTube and LinkedIn audience, because they won't be able to see the poll. So you can just slowly maybe read the question. Okay. Where Thank will you. dollar index move in next 1 year from current level of 93, 82 to 86 level, 98 to 102 level, or it will consolidate between 89 to 94 level? We have 30 seconds for the poll. Right. Let me end the poll and share the results.
46% of the people believe that dollar index will move higher from the current level of 93 to, and will move towards 98 to 102 level. और बहुत लोगों का 38% of the people are thinking that it will consolidate between 89 to 94 level. Let me share the view of CR Forex research team. Before we move ahead, let us understand how US economy is performing. When I go and meet exporters, they tell me bank wale aaye the, and banks were asking 3 typical questions. कि सर आपका इस साल का टर्नओवर क्या है, आपका पिछले साल का टर्नओवर क्या है, और आपका आने वाले साल का टर्नओवर क्या है. The reason when the bankers ask this question to exporter or importer is to understand one important aspect, that how is the company doing in terms of growth. तो जैसे bankers या promoters अपने टर्नओवर को देखते हैं, उसी तरह हम लोग भी जो एनालिस्ट होते हैं, जो एफएक्स कंसल्टेंट होते हैं, they will see, in order to track an economy, they will see how the economy is growing. So let us see how US economy is growing. US economy has been growing fantastically. Mind-boggling numbers है. उनका 20 साल का जो एवरेज है, that is close to 2.2%, and currently they are growing at 6.7%. As any company which is doing extremely good, तो उनके प्रमोटर क्या करेंगे? They will try to invest in the company. जो भी profit आया, they will invest in the company. Similarly, Joe Biden has decided that it will keep the US economic growth momentum superbly. So he had decided that he will spend $2 trillion, approximately $2 trillion growing economy pay on various funds like infrastructure, family and pension. Economy जो 6% से grow कर रही है, वहां पे आप और इन्वेस्ट करोगे तो इसका ग्रोथ बहुत ही सुपर हो जाएगा. 20 साल का एवरेज है 2.1 और अभी ग्रो कर रहा है 6.7, 3 गुना ज्यादा. इफ यू इन्वेस्ट मोर, इट विल ग्रो फर्दर हायर. ये तो ग्रोथ स्टोरी था. सो व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंस इन द इकोनॉमी is that their unemployment level falls, and that is the same case which is happening in US right now. एक important aspect है, unemployment rate तो कम हो रहे हैं, उसके साथ साथ पे the most important thing, unemployment level was at 3.5%, before COVID also, but currently it is at 4.8%. But the most important thing currently which is happening in US is how is their wage and salaries are growing. Wages and salary are growing at 25 years high. They are growing at an average speed of 10 to 15%. If you can see the chart, it means that someone who has got a salary of $100 per hour last year, he will be getting $110 or $115 this year per hour. That is a superb number. Believe me, इंडिया में 10-15% का ग्रोथ देखने मिलता है, यूएस, यूरोप, यूके पे हार्डली 2-2.5% का ग्रोथ मिलता है. अगर हम एवरेज भी देखेंगे तो 4.5-5% का था इनका लास्ट 10 साल का. तो वेजेस इज आल्सो ग्रोइंग. सो इफ द ग्रोथ इज देयर, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो रहा है, वेजेस आर आल्सो इंक्रीजिंग, then what will happen? Their inflation will rise. Currently, their inflation is close to 5.4%. 5.4% अगर डेवलप इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे, that is a huge number. Last 20 years average is 2.2%, and currently they are growing at 5.4%. इंडिया अगर कोई डेवलप मार्केट है, वहां पे उनके सेंट्रल बैंक लाइक यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, उनके सेंट्रल बैंक का टारगेट होता है कि भाई हमारा इन्फ्लेशन 2% हो जाए, पर दे वर बिलो 2% फॉर अ लॉट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. फाइनली इन यूएस ये नंबर ब्रेक हुआ है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज अ गुड डेटा. इंडिया में इफ इन्फ्लेशन इज एट 10-12%,
we say that inflation is higher. But अगर inflation 5-6% है US में, so it is considered as good thing. Now, inflation expectation is also great in US as of now. 1 year inflation expectation is at 5.3% and 3 year expectation is 4.2%. When I say 1 year expectation, मतलब 1 साल के बाद में भी ऐसा लग रहा है कि inflation जो है 5.3% रहेगा. So the inflation is at 5.3% after 1 year and 4.2% after 3 years. It means that growth in US is gonna be there. Growth रहेगा. तो अब क्या होगा? You know, in India there is a tagline, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे. इंडिया का तो पता नहीं, पर यूएस में तो डेफिनेटली अच्छे दिन चल रहे हैं. उनका जीडीपी ग्रो कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूसिंग, इन्फ्लेशन इज राइजिंग. तो नाउ व्हाट their central bank will do? Their central bank will do one thing, which is called tapering. फेड मतलब उनकी जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगी? वो टेपरिंग करेगी. टेपरिंग का मीन्स दे विल take liquidity of dollars from the economy so that the inflation do not go to 10-12%. Inflation drops down to slowly कम हो जाए inflation. They can do that thing. They can do tapering via two things. पहला, they will reduce their bond buying purchase. Bond buying purchase मतलब वो जब कोविड का क्राइसिस आया, उन्होंने बॉन्ड खरीद के, मार्केट से बॉन्ड खरीद के डॉलर का लिक्विडिटी इंजेक्ट किया. नाउ दे विल रिड्यूस दैट. सेकेंड, दे विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. अगर इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट तो पीपल विल पुट देयर मनी इन द बैंक. सो बाय डूइंग दैट दे विल रिड्यूस द डॉलर लिक्विडिटी इन द सिस्टम. एंड एज वी ऑल नो, एनीथिंग, किसी भी चीज का जब सप्लाई कम हो जाता है तो उसका वैल्यू ऊपर जाता है. You know, let me show you an interesting chart. Tapering they have done in 2013 also. 2008 financial crisis आया, they pumped a lot of dollars into the economy, and in 2013 they have done tapering. So then at that point of time dollar index moved higher. 27% dollar index move किया था between 2013 to 2015. 27%. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस बार भी क्या 27% जाएगा? वी कैन से दिस टाइम द टेपर इज विदाउट टेंड्रम. लास्ट टाइम जब टेपर हुआ था तब मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी मची थी. डॉलर इंडेक्स भी अप हुआ था. डॉलर रूपी ऑल्सो वेंट फ्रॉम 55 to 68 level. This time, as the central bank across the world, and especially Fed, has prepared the market, so it will not go 27%, but definitely वो ऊपर तो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. 89 का लेवल चल रहा था अप्रैल मई के आसपास में, and dollar index was close to bottoming out. At that point of time, we have released a report in CNBC saying that dollar index has bottomed out. 91.5 का लेवल जाएगा फर्स्ट टारगेट. सेकेंड टारगेट इज 93 to 93.5, and dollar rupee will also move towards 74.5 to 75 level. तो ये ऑलमोस्ट दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं. नाउ लेट अस सी वेयर इट विल गो बियॉन्ड 94 लेवल्स. रुपी का भी टारगेट अचीव हो गया है एंड डॉलर रुपी का भी टारगेट अचीव हो गया है. You know, every week CNBC पे you can see our report. It is published. So definitely, as the chart is showing, that the probable trend of dollar index is on the upside. At the end, at the middle of the presentation, I will give you exact target of dollar index. Dollar index कहाँ तक हम expect कर रहे हैं. Before doing that, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि dollar index is an index of 6 currency. So it is important to understand
how these 6 currencies are doing और उनके इकोनॉमिक्स कैसे कर रहे हैं. It is important. That also contributes to dollar index. So we will not be able to cover the entire 6 currencies, but जो euro and pound है, which covers 72% of the index, we will explain in today's presentation that उनका इकोनॉमी कैसा कर रहा है. तो अगर आप now let us talk about eurozone. Eurozone जो है, eurozone कैसे बना? Eurozone constitutes 27 states, 27 countries जिसको बोलते हैं. It's a coalition, kind of a coalition government कैसे बनती है, वैसे eurozone is a coalition of 27 countries. eurozone के अंदर में जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है वो है जर्मनी. जर्मनी को आप कह सकते हैं कि इट इज द हार्ट ऑफ eurozone. If Germany is doing well, eurozone will do well. Now जर्मनी के अंदर पे एंड पूरे यूरोजोन के अंदर पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है. जर्मनी वॉज जर्मनी के जो चांसलर थे उनका नाम था एंजेला मर्केल. वेरी बिग पॉलिटिशियन एज फार एज एंटायर यूरोजोन इज कंसर्न. शी हैव बीन अ चांसलर इन यूरोप फॉर ऑलमोस्ट 16 years. कुछ दिनों में शी इज मूविंग आउट and 3 other parties will form a new leader there. जो एंजेला मर्केल थे उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े क्राइसिस से एंटायर यूरोजोन को भी बचाया and she have also saved Germany also. One of the 2 things which she have done greatly is that यूरोजोन का जब क्राइसिस आया था तब उनको बचाया. Second important thing what she have done is that she have kept the entire यूरोजोन compact. वरना बीच बीच में बोलते हैं, पोलैंड बोलता है आई वांट टू मूव आउट, यूके ऑलरेडी मूव आउट, जर्मनी बोलता है आई वांट टू मूव आउट. बिकॉज ऑफ एंजेला मर्केल, उनकी वजह से दैट यूरोजोन वाज एग्जिस्टिंग फॉर लास्ट 16 years. नाउ शी इज मूविंग आउट. यूरोप के अंदर पे ऐसा माना जाता है कि कोई उनका रिप्लेसमेंट अभी अवेलेबल नहीं है. सो इफ शी इज मूविंग आउट then definitely Eurozone will enter into some kind of political crisis. Each of the 27 members will say that we want to exit Eurozone. If they do that, you know what has happened to pound when UK went out of Eurozone, what impact it had. 7 साल 8 साल तक लड़ाई, they're fighting only. So similar thing will happen to Euro also. That is crisis number 1. Second crisis, as we all know, that Europe is having an energy crisis. When I say Europe is having an energy crisis, that energy crisis has turned into an economic crisis. पहले energy crisis था where they were not getting petroleum, natural gas. So because of that, बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हुए, आउटपुट हैज फॉलन डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज इंक्रीज, इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज. सो ऑल ऑफ द डेटा आर कमिंग बैक बिकॉज ऑफ दैट. एंड इफ यू सी द चार्ट, बिकॉज ऑल ऑफ दिस रीजन, euro which was trading at 1.1910 level has started coming down and it is expected to further come down. Now let us move to what is happening to UK economy. UK and Europe का प्रॉब्लम है ना, सेम टू सेम है. यू कैन से मिरर इमेज. यूके में भी एनर्जी क्राइसिस है. बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी क्राइसिस it has turned economic crisis where there data are coming bad, GDP is falling, inflation बढ़ रहा है, output कम हो रहे हैं, फैक्ट्री बंद हो रहे हैं. उसके अंदर में उनके जो सेंट्रल बैंक है, दे आर एक्सपेक्टेड डू अ बिगर ब्लंडर. उन्होंने आके कह दिया as inflation is increasing we will go and increase the interest rate. अभी इकोनॉमी इज इन वेंटिलेटर. वहां पे आप ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देंगे विच इज फाइनेंस, तो इकोनॉमी का हालत क्या होगा, खत्म हो जाएगा. इफ दे डू दैट, that will be a bigger blunder.
and once they announce that they are going to increase the interest rate, euro pound jo hai, it will fall at the very fast pace, probably from 1.37 directly 1.33 or 1.34 level. You can see in 1 or 2 days only, if they announce that they are going to increase the interest rate. So, just a comparative study. आप US में देखेंगे, it is all in green. Europe, लाल भी है, green भी है, yellow भी है, but UK, all red. So the fall in UK will be much higher. एक बार जो भी स्टोरी डिस्कस की है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Story number 1, US economy is doing good. Story number 2, Eurozone and UK are not doing that good. Story number 3, as US is doing good, Fed is gonna do tapering. Tapering matlab they will reduce the bond buying, and second, what they will do, they will increase the interest in coming days. Europe ka economy and BOE, UK ka economy is not doing that great, because of which ECB and BOE will not increase the interest rate in coming days. Should not be increasing the interest rate in coming days. So if that happens, ये सब का impact क्या रहेगा? इसका सबसे बड़ा impact रहेगा, dollar index will move to 100 level. This is a very key insight. आपके पास में कोई पेपर है, पेन है, चाहे आप लैपटॉप पे नोट्स ले सकते हैं. Please make it a point that dollar index is going to move to 100 level. यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स भी आए हुए हैं वेबिनार के अंदर पे. तो हमारे जो क्लाइंट है, when euro was trading at 89 level or at 1.19 level, we had just made a call to them that please euro को cover करे, pound को cover करे. They have covered. And when the euro and pound is falling, they give us a call and they say that whether whatever forwards are in the money, we should use them or not. We are saying आप उसको यूज ना करें, आप आपके जो नए ऑर्डर से उसको कवर करें. तो क्लाइंट तो कि हमको जानते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो कवर करते हैं. पर जो हमारे क्लाइंट्स नहीं हैं, जो हमको फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज इसको नोट करें कि डॉलर इंडेक्स इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स 100 लेवल, यूरो यूएसडी इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स 1.12 लेवल, GBP USD is going to move towards 1.32 level. अगर कोई भी यहाँ पे एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने 89 यूरो पे कॉस्टिंग लेके ऑर्डर लिया था, आप अनकवर्ड है. पाउंड आपने ऊंचे लेवल पे ऑर्डर लेके रखा था, आप अनकवर्ड है, और आपको हल्का सा भी डाउट है कि आपको कवर नहीं करना चाहिए. यू हैव आवर टीम का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल भी दिया हुआ है. आप उनसे कांटेक्ट करें, हमसे अपॉइंटमेंट लेने का ट्राई करें. वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन व्हाटएवर बेस्ट पॉसिबल वे कि आपको हेज करना कितना इंपॉर्टेंट है. हल्का सा भी डाउट है आपको, प्लीज हमें कॉल बैक करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आप इसको ओपन नहीं रख सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, दैट ऑयल अभी कहां जाएगा और उसका इंपैक्ट अपने USD INR में कहां पे होगा. ऑयल ना अभी जब भी मैं पेपर पढ़ता हूं या कभी भी CNBC या ब्लूमबर्ग टीवी खोलता हूं, तो सब जगह पे एक ही हेडलाइन, क्रूड ऑयल प्राइस विल मूव हायर, देयर इज ए एनर्जी क्राइसिस, देयर इज ए एनर्जी क्राइसिस. तो ये जो क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं वो तो हम समझेंगे ही, और ये समझेंगे कि क्राइसिस कैसे बना. देयर आर टू मेन रीजन. एक, आप लोगों ने सबने पेपर पे टीवी पे सुना होगा, और दूसरा जो इनसाइट है, ये हमारा खुद का रिसर्च है. पेपर और टीवी पे बताया नहीं जाता, ये हमको खुद को लगता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सुनिएगा प्लीज. पहला जो रीजन है, बहुत कॉमन सा रीजन है, दैट इज लैक ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट.
जो बड़े कंट्रीज है जैसे यूएस है, यूरोप है, यूके है, they wanted to reduce the carbon emission in the environment. Because of that they have taken a bold step. उन्होंने क्या स्टेप लिया? That we will not use conventional source of energy. Conventional source of energy मतलब कोयला है, ऑयल है, they will not use that. Because of that carbon emission ज्यादा होता है, pollution होता है. So they wanted to go to a cleaner energy, means wind energy, solar energy. So if you see the chart from last 10 years, there is the investment in conventional energy is reducing, and renewable energy जो है, solar है, wind है, उसमें बढ़ते जा रहा है. Because of that, demand and supply का mismatch हुआ है. That is a bigger story. Now इस बार का जो energy crisis है, वो energy crisis है कि political crisis है. Let me explain that to you. जो पूरा कच्चा तेल है, the oil is, oil का जो मार्केट है, वो 3-4 कंट्रीज इसको चलाते हैं. पहला है ओपेक, जो एक बॉडी है, जो यूएई वो सब आ गए उसके अंदर पे. फिर रशिया है और तीसरा है यूएस. ये 3 बड़े लोग हैं जो ऑयल के प्राइस को डिसाइड करते हैं. अभी क्या हुआ? यूरोप पे सबसे पहले क्राइसिस आया. लेट अस अंडरस्टैंड कि क्राइसिस कैसे आया. यूरोप ने एक पॉलिसी बनाया कि दे विल नॉट हैव कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दे हैव चेंज्ड देयर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन अ डिफरेंट मैनर. So they are dependent on non-conventional source of energy. इसका मतलब they are dependent on wind energy, they are dependent on solar energy. Now when they are dependent on wind and solar, indirectly they are dependent on weather. इस बार क्या हुआ? Weather condition in Europe was deteriorating. अब यूरोप जो है, it imports 30% of oil from Russia, 38% of natural gas from Russia. यूरोप के अंदर में छोटे छोटे कंट्रीज है, लाइक पोलैंड है, फिनलैंड है. ये सब कंट्रीज 75% of their oil needs they are importing from Russia. Russia was keeping a track on Europe ka weather. They have anticipated that weather condition in Europe is going to deteriorate. So when the weather condition deteriorate hone laga, so they started increasing the price, saying that supply is lower. तो price बढ़ते रहा. तो other जो bodies है, US and OPEC, they have not intervened. उसके पीछे भी reason है. अगर last 4-5 साल का बात करेंगे, whenever the crude oil price is increasing, definitely US will come and say sell gas production they will increase so that they can earn lot of export revenue. They wanted to dilute OPEC ka earning, so they have increased their oil ka production. But this time, when the prices of crude were rising, they have not increased their production. The entire reason is political reason. US always wanted that Europe should not depend on Russia for their importing of oil and natural gas needs. US को था कि भाई आप हमसे आके माल लो. यूरोप को था ऐसा, यूएस को ऐसा था कि यूरोप यूएस से आके माल ले. लेकिन यूरोपियन have their some other strategic reason because of which they said they will import from Russia. Russia was increasing the price. US, which could have increased the production but was keeping quiet just to हीट फील कराने के लिए यूरोप को, आपने रशिया के साथ टाई अप किया, आप रशिया के साथ टाई अप करो, लेट द रशिया इंक्रीज द प्राइस. सो यूरोप ने प्राइस बढ़ाया, यूएस वाज वाचिंग द गेम. अब यूरोप प्राइस बढ़ा रहा है, यूएस भी मजे ले रहा है. यहाँ पे और एक थर्ड बॉडी है, ओपेक करके. ओपेक in April 2020, when the crude oil price went to negative era in the March 2020, have reduced its production
by almost 10 to 15%. He was also watching the game. उनके पास में भी एक चांस था कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाए एंड ऑयल के प्राइस को कम करके आए, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि यार रशिया इंक्रीज कर रहा है, यूएसए इंक्रीज कर रहे हैं, व्हाई शुड आई increase the production and reduce my profit margin? Let me also make more money in the crisis time. So because of this reason, political reason, the crude oil prices are rising. Crude oil prices तब तक बढ़ेंगे जब तक ये political crisis to make more money is there. Once US or Russia or OPEC countries decide कि नहीं भाई बहुत पैसा कमा लिया है, so the crude oil price will come down. But expectation is that they will not do that until the winters in US, Europe and UK is over. Winter के बाद में they will come up with this scenario. Till winters, Europe and UK are having winters, crude oil price is expected to move higher, and probably we can see crude at 100 level in coming months. Now before we move to one of the favorite part of the presentation, जो सब क्लाइंट पूछते हैं कि भैया डॉलर रुपी कहाँ जाएगा, ये बता दो, 77 जाएगा कि नहीं. Before we decide where the dollar rupee will go, let me launch a poll. Where do you expect USD INR to move by next 1 year? 73 to 74, 74 to 75, 75 to 77. We have 30 seconds for the poll. जो भी मैं 15-20 साल से मीटिंग करता हूँ, जब भी मैं एक्सपोर्टर के पास जाता हूँ, तो एक्सपोर्टर्स को हमेशा लगता है कि डॉलर रुपी पेयर will weaken only, and when I go and meet importers, they say that करेंसी तो अपना स्ट्रांग हो जाएगा. So if the answer, जो पोल का रिजल्ट आ रहा है, उससे भी यही लग रहा है कि we have more exporters in today's meet than importer. Let me end the poll. Let me share the results of the poll. 67% लोग ऐसा मान रहे हैं कि next year the dollar rupee pair will move from current level of 75 to 77 level. मतलब क्लियर कट है, एक्सपोर्टर्स को चाहिए कि डॉलर रुपी 77 ही जाए. लेट अस सी कि डॉलर रुपी कहां जाएगा. So before coming to a conclusion where dollar rupee pair will move, let us discuss what are the factors which can affect dollar rupee. तो पहला दो फैक्टर है DXY, ग्लोबल फैक्टर्स DXY, क्रूड ऑयल, डोमेस्टिक पे इनफ्लो, ट्रेड डेफिसिट, RBI स्टैंस. तो पहले से स्टार्ट करते हैं. DXY, we have been covering that part. Okay, we are expecting dollar index to move higher from 94 levels to 100 levels. So dollar index and dollar rupee pair has a positive correlation. If dollar index will move higher, then dollar rupee pair should also move higher. Now let us see crude का impact क्या रहेगा. As we are expecting the crude oil price to move towards 100 level from a current level of 82 kind of level, तो क्या होगा, उससे अपना trade deficit जो है, what do you mean by trade deficit? Trade deficit means export is less than import. So our trade deficit for the month of September is 22.94 billion. Generally, historically, on an average 13 से 15 billion dollars हम का trade deficit होता था. Last year, because of lockdown, the trade deficit fallen to 8 to 9 billion dollars per month. But this time again, the trade deficit has started increasing. The entire reason for trade deficit to increase was the crude oil price. आप देखिए अगस्त पे हमने 11 बिलियन का इंपोर्ट किया था कच्चा तेल, अभी हमने सितंबर में 17 बिलियन का इंपोर्ट किया.
इंपोर्ट्स भी 47 से 56 बढ़े. तो क्रूड एंड कोल वर द मेजर कंट्रीब्यूटर for the increasing in trade deficit. So if the crude oil price moves higher, then we expect the trade deficit to increase. And if trade deficit will increase, it will have a negative impact on dollar rupee pair. You know, RBI every month एक अपना monthly bulletin निकालता है. तो अक्टूबर के मंथ पे they have given a bulletin. मंथली बुलेटिन आया, उस पे वो लोग अलग अलग चीजें डिस्कस करते हैं. एक चीज उन्होंने ये डिस्कस की है कि उनका जो एवरेज प्राइस है ऑयल का, उन्होंने 75 पकड़ा है. सो दे से दैट इफ 10% प्राइस इंक्रीज होगा 75 से, मतलब 7-8 रुपया बढ़ेगा, तो उससे इन्फ्लेशन जो है 30 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा और ग्रोथ जो है 20 बेसिस पॉइंट कम होगा. तो 75 से 83-84 तो चल ही रहे हैं, और अगर यहाँ से 83 से 84 होगा तो आप समझ जाइए इन्फ्लेशन कहाँ पे होगा. इन्फ्लेशन फॉर इमर्जिंग कंट्री लाइक अस इज अ नेगेटिव थिंग, एंड व्हेनेवर इन्फ्लेशन बढ़ता है किसी भी इमर्जिंग मार्केट पे, तो उसका करेंसी जो है डेफिनेटली वीक होता है. थर्ड जो फैक्टर है वो है इन्फ्लोस. हर दिन ना न्यूज़पेपर पे आता है निफ्टी मेकिंग हायर हाइस, सेंसेक्स इतना हो गया, निफ्टी 18,500 हो गया. बहुत इन्फ्लो है, बहुत तेजी है. इन द करंट ईयर वी हैव रिसीव्ड 39.29 बिलियन का इन्फ्लोस, एंड एक्सपेक्टेशन भी है कि अगले 2 से 3 महीनों में 55,000 करोड़ का और भी इन्फ्लो आएगा. 55,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली कम्स टू $8 बिलियन. तो 8 बिलियन का इन्फ्लो आएगा, लेकिन ट्रेड डेफिसिट कितना है? 22 बिलियन का. So whatever inflows is there, that will be easily observed. Now, you know, when we speak with lot of clients, वो हम उनको एक चीज हमेशा कहते हैं, as an analyst, we have to track the world economy, we have to track the Indian economy. But in last few years, one of the most important thing as a forex consultant, which we have to track, is what is RBI doing, because RBI is one of the biggest bull in the forex market. इस साल biggest bull जो है, they have bought $61.7 billion. जितना भी पैसा FII का आया, FDI का आया, ECB का आया, लोन आया, सबका सब RBI ने बाय कर दिया. तो जब RBI बाय कर रहा है, तो it indicates that bottom जो है वो लिमिटेड रहेगा. अपसाइड अनलिमिटेड, बॉटम लिमिटेड. You know, second reason why RBI will not allow the currency to appreciate is that RBI has to give dividend to the government. You know, RBI का अभी जो books है, that closes on March. Earlier it was June. From last financial year, they have closed their books on in the month of March. In the month of May, उन्होंने गवर्नमेंट को 99,000 करोड़ का डिविडेंड दिया. We all were expecting that they will give a dividend of 53,000 crore. उन्होंने मार्केट से ज्यादा डिविडेंड दिया. तो उस टाइम पे हमने एक वीडियो भी बनाया था. एवरी वीक वी हमारा एक चैनल है यूट्यूब का, CR Forex चैनल करके, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डॉलर रुपी का व्यू क्या है या इकोनॉमी में क्या हो रहा है वो आपको मिलेगा, आप उससे सुन सकते हैं. So in the month of May, we have released this video saying that RBI have come up with a dividend. तो जो 99,000 करोड़ का जो डिविडेंड था, उसमें से close to 80,000 करोड़ फॉरेक्स का ट्रेडिंग करके कमाया, and they have given the dividend to the government. Now, किसी को भी एक बार पैसा दे दो, उनका एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट टाइम के लिए भी होता ही है. तो सिमिलरली गवर्नमेंट का भी एक्सपेक्टेशन रहेगा कि भाई RBI ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड गवर्नमेंट को दे. नाउ व्हेन दे हैव क्लोज्ड द बुक इन द मंथ ऑफ मार्च, द डॉलर रुपी का रेट वाज 73.12. सो इफ द डॉलर रुपी क्लोजेस अबव 73.12 in 31st March, RBI will make money.
If it closes below 73.12, RBI को नुकसान होगा. So it is no brainer that 31st March के पहले Rupee has to close on 31st March. Rupee has to close above 73.12 if RBI wants to give dividend to government. हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नर RBI के ऊपर में प्रेशर रहेगा to give dividend to the government. So if they have to give dividend to the government, then 73.12 will act as a base for dollar rupee pair till March. एक दो दिन नीचे आ सकता है, but it will not sustain below 73.12 level. So now, what is the outlook on dollar rupee pair? अगर आप चार्ट देखेंगे, सिंपल सा चार्ट देखेंगे, तो जो डॉलर रुपये का सपोर्ट है वो है 74 से 74.10 लेवल का पहला सपोर्ट. रेजिस्टेंस जो है, फर्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 75.50 to 75.70 levels. This is a 15-month रेजिस्टेंस. इस बार भी वो 75.50 75.70 का लेवल क्रॉस नहीं हुआ. If that level is broken, then the next target for dollar rupee will be close to 77. So outlook of CR Forex team, short term outlook ऐसा है कि we might see some kind of appreciation because of the inflow, and the pair can move towards 74 or 74.10 level. And on the upside, the pair will take a resistance of 75 and a half level. Once 75 and 75 and a half level is broken, the pair will definitely move towards 77 levels. उसका फंडामेंटल रीजंस भी है. DXY ऊपर रहेगा, कच्चा तेल ऊपर रहेगा, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है. ये सब फंडामेंटल रीजन की वजह से डॉलर रुपी विल मूव टुवर्ड्स 77 इन कमिंग 1 year. एक्सपोर्टर्स विल बी डिलाइटेड कि भाई चलो डॉलर रुपी 77 जाएगा. When I say dollar rupee will go to 77, then exporter will relax and say, भाई 77 जवानु छे, 77 जाने का है, तो why should I hedge my export? तो hedge तो करना पड़ेगा. Let me give you an example. We have two clients. Say client A in chemical industry, client B also in chemical industry. Client A हमारा सर्विस नहीं लेते हैं और कहते हैं I will do everything on spot. Client B, we have pushed him कि आप सर्विस ले लो, and we have told them, okay boss, forward book तो 50% तो करना ही पड़ेगा, 50% we will take on spot. So if client A, who is taking everything on spot, say नवंबर में पैसा आया spot पे लेंगे, दिसंबर में पैसा आया spot पे लेंगे, तो his average for the entire 3-4 months will come to 74.48. Client B जो है, if he books forward 50%, so what he will get? He will get a premium of 70 paisa, assuming that his cycle is 3 months. So what will happen? जो client A है, his average is 74.48. Client B का जो average है, वो है 75.18. ये जो 70 पैसा का difference है ना, it is nothing. कोई credit हमारे लिए नहीं है. He is getting that 70 पैसे का difference because he is a policy कि 50% spot पे लेंगे, 50% forward पे लेंगे. So because of that forward premium, mathematically, client B, who is always booking a forward, will get more better rates than client A. तो अगर आप exporter है, आप ये मत देखिए कि डॉलर रुपी पेयर will go to 80 level, 78 level, 72 level. Follow a disciplined policy. If you do that, I can write it down in a piece of paper that you will definitely gonna make more money than taking entire thing on spot. But important है, एक ही पॉलिसी बनाना है. कभी 50% कवर करेंगे, कभी 70% कवर करेंगे, कभी 80% कवर करेंगे, ऐसा नहीं. Whatever policy you make, that I will cover 50%, so you strictly follow that policy. 5-10% based on consultant advice, you can change, but not drastic changes. You have to follow the policy. Now, let us see what should be the ideal strategy for exporter and importer.
CR Forex is having more than 312 clients. तो हमने जो एक्सपोर्टर क्लाइंट है उनको दो बड़े बकेट पे डिवाइड किया है. फर्स्ट इज थिन मार्जिन एक्सपोर्टर. थिन मार्जिन एक्सपोर्टर्स definition is either they are agri exporter, chemical exporter, cotton exporter, जिनके margins जो है they are wafer thin. When I say wafer thin, say 1% to 3% or 1% to 5%. Mostly they are traders. They take costing on a spot basis. Say if the current spot rate is 75, they will take 74.50, 74.75, and if they want to quote aggressive, they can quote 75 also. And their payment cycle are smaller. They will get money between 30 to 45 days. So जो उनके लिए हमारा एक ब्रॉडर पॉलिसी है. अगर आप हमारे रिपोर्ट्स भी देखोगे उस पर भी हम ये डिफाइन करते हैं कि दे शुड फॉलो अ बैक टू बैक पॉलिसी. व्हेन आई से बैक टू बैक पॉलिसी, सपोज आज उनको ऑर्डर आया, so 70% तो कवर करना ही है बैरिंग, 30% they can keep it open. If the consultant view is that in 1 or 2 days dollar rupee pair will depreciate, and when the level is at on higher level, they should cover 100%. So for example, when dollar rupee pair moved from 73 to 75 and a half level, and when dollar rupee was trading 75.20 kind of level, we told exporters that boss, you hedge 100%. The entire logic was that there are higher chances that the pair can move towards 74-80 levels. So better 2 रुपया ऊपर आ गया एक महीने के अंदर पे, आप ऑर्डर भी जो लेंगे वो 75 के आसपास का लेंगे. If because of the inflow dollar rupee pair comes down to 74.80, you will get double problem. एक 75 का ऑर्डर है उसको कवर नहीं किया, और नया ऑर्डर जो आया उसको भी कवर नहीं किया, जो वो भी 75 के कॉस्टिंग पे, and the spot is at 74.80. So we tell them that you cover on a back to back basis. अभी के लिए, as the pair is trading close to its resistance, we advise them to hedge 100%. अगर आप अभी एक महीने में as a pair is trading close to 100, near their resistance of 75 and a half, आप 100% कवर कर सकते हैं. जो thick margin exporters है, by definition, thick margin exporters like textile, pharma, engineering goods, IT, they are all called thick margin exporters. Mostly they are manufacturers. Unke margins are decent. When I say decent, 5 to 15%. IT and pharma can have little higher margin like 20-25%, but broadly textile or engineering पे 5 से 15% का ही margin होता है. They take costing much lower than the spot. When I say much lower than the spot, it means that अगर 75 चल रहा है, they will take say 73 and a half or 74 or say 72 also. Their payment cycle are 90 to 150 days. Some cases it can be 180 days also. So in current scenario, we are advising them not to cover beyond 55%. उनका एक जनरल पॉलिसी हमने बना के रखा है, between 40% on the lower side, 60% on the higher side. When I say 40 to 60%, वो उनके orders क्या नहीं. Say suppose if they are exporting 100 crores in a year, they can hedge 40 crore minimum, maximum they can hedge 60%. When I say 40 crores, they are supposed to hedge, in combination of short term, medium term, and long term forward. In current scenario, we are advising them to cover 55%, not beyond 55%. So when we suggest them कि आप कुछ जो फॉरवर्ड है वो मिक्स करें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे, उसके 3 बड़े एडवांटेजेस है. पहला एडवांटेज है, प्रीमियम्स in the longer term are higher than the shorter term. If you see the screen, this is a screen where you can get live rates and it will help you to negotiate with your banks. So for example, if the current spot rate is 74.92 level, if you are booking for 31st October, you will get a premium of 3 rupees 49 paisa. So the net rate will become
78.41. If you see near that 78.41, we have said the premium percentage is 4.63%. If you see the near-term premiums, that is 3.65%. So near-term pay and long-term pay, premium differential is 1%. 1% अच्छा ना, अच्छा खासा amount होता है. So because of that, we say आप long term में book करें. Second advantage is that if your payment is coming delayed, then you do not have to go for cancellation. The one of the biggest advantage, हमारे जो clients हैं उनको हम पहले से ही कोविड के पहले से ही मिक्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड कराते हैं जिनका मार्जिन स्टिक होते हैं. तो because of COVID, the shipment was not been able to proceed and their payments got delayed. तो जो client उन्होंने जो नियर टर्म में फॉरवर्ड किए थे, they have to cancel and rebook, and mark to market का जो लॉस था वो उनको upfront पे करना पड़ा. Because in the month of March, dollar rupee shoot up extremely high, 70-71 चल रहा था, and moved to 75-76 level in a very short period of time. So अगर आपने 5 लाख डॉलर बुक किए हैं और डॉलर करेंसी 4 रुपया मूव हो गया है, तो 20 लाख रुपीस आपको इमीडिएटली पे करना है. तो आपका कैश फ्लो हिट हो जाता है. पर जिन्होंने लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड्स बुक किए थे उनको कुछ भी इश्यूज नहीं आए. बिकॉज द पेमेंट्स वर डिलेड, दे वर एंजॉयिंग टू थिंग्स. कैंसिलेशन नहीं करना पड़ा, प्रीमियम्स भी मिलते रहे. अगर पेमेंट डिले आ रहा है तो कोई इशू नहीं है ना, यू आर गेटिंग प्रीमियम्स, तो वो भी हो गया. तो वी सजेस्ट जो थिक मार्जिन एक्सपोर्टर है, दे शुड डेफिनेटली यूज दिस टूल effectively. If you face any issues in booking long term forward, then you can again contact us and contact my team. They will help you कि ये long term forward कैसे करते हैं, उसको utilize कैसे करते हैं. If we are utilizing it, what is the cost the bank will charge you? This all kind of help my team can give it to you. The third and the final advantage is you can get an opportunity to play between spot and the far forward. मैं आपको example देता हूँ. Example, 31st August को, when dollar rupee was trading at 73.20, if someone who only books near term कि भाई मेरा पैसा कब आएगा, मैं वहां पे बुक करूंगा, उतना वहीं पे बुक करूंगा, तो उन्होंने बुक कर लिया भाई अक्टूबर के लिए, उनको 42 पैसा का प्रीमियम मिला. द नेट रेट इज 73.62. एनर्जी क्राइसिस आया, कच्चा तेल शूटअप हो गया अक्टूबर में, DXY मूव हो गया, एंड डॉलर रूपी केम फ्रॉम 73.20 टू 75.5. जिन्होंने शॉर्ट टर्म फॉरवर्ड बुक किए उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उनको स्पॉट पे ही पैसा लेना पड़ेगा. स्पॉट उनको फॉरवर्ड को यूज करना पड़ेगा. जिन्होंने फार फॉरवर्ड बुक किए हैं, for example, someone who has booked for July 22 in the month of August, they have an advantage. If the current spot rate is higher, they can take an opportunity and take money in the spot. If the current rate is lower, they can definitely pre-utilize their forward contract. So if you're doing this, you will get an advantage. मार्केट को प्ले करने का आपको बेसिकली एडवांटेज मिलेगा. Now let us move to the last part of the presentation, that is what is the strategy for importers. I tell to all my clients that it is difficult to become a consultant for importers and it is easier to become consultant for exporters. क्यों? क्योंकि when we tell exporters to hedge, they will definitely listen to us and they will hedge, because when exporters are hedging, they will get premiums. But when importers को premium pay करना पड़ता है, so they are reluctant to hedge. पर last year अच्छा साल था उनके लिए. Currency went to 77 and then it was coming down. Lockdown था. Crude oil prices was at lower level. DXY was also falling. DXY moved from 103 levels to 89 level. So all factors were
on a favoring side for importers. But current year is a different scenario. DXY is expected to move higher. Crude oil price will move higher. Our trade deficit will increase. So any dips, let me make it very specific, any dips should be taken as an opportunity to buy imports. Because of inflow, if you get any level close to 74.10 levels, please go and buy dollar rupee, because dollar rupee have a tendency that the pace of depreciation is much higher than the pace of appreciation. So importers को request कर रहा हूँ, please make a note, when dollar rupee comes close to 74.10-20 levels, please go and buy import. With this, I will hand it over to Beverly to take it forward. I will request all the audience to raise hands and ask questions. जो YouTube के या LinkedIn के जो viewer हैं, they can type a question to RIP team, and then Beverly will ask questions from on their behalf. Yes. Thank you so much, Mr. Pabari, for explaining the impact of such price surges on exporters. So I'm sure this session must have been very helpful for exporters. So we will now begin the Q&A session. As Mr. Pabari said, you can directly ask a question to our speaker. You can raise your hand. And at the moment, please don't add any questions in the chat section. You can simply raise your hand and we'll allow you to unmute and ask your question. For our viewers on YouTube and LinkedIn, you can add your questions in the YouTube or LinkedIn chat box. So I think we have someone who's raised their hand, VBL Innovations Private Limited. Yes, you should be able to talk. Yeah. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. कैसे हैं आप? Yeah, doing good, sir. What about you, sir? अच्छा, sir. Sir, only one question we are having. We are taking the EPC credit, export packing credit from the bank, and we are also enjoying the interest equalization scheme. Right. So whether this interest is still there or it has gone, because last date of interest equalization was the 30th September. So still it is there or not, we are not sure. And any RBI notification has come in this regard? So this is one of the most asked question by all exporters. Let me answer that to you, sir. Currently, the interest equalization जो scheme है, वो 30th September तक ही. But we are talking with a lot of export bodies like FIO, government से भी बात करते हैं. उनसे एक understanding समझ में आया है कि the scheme will definitely come again. उसका date पता नहीं है, but the scheme will definitely come again, and probably as an expectation है industry पे कि जो 5% का subvention था, it might reduce a bit, say to a 3% subvention. But scheme आएगी, ऐसा जो भी exporting bodies है, उनसे ये हमको समझ में आ रहा है. Okay, so it means government is going to may soon announce the scheme where we cannot avail the 5% return subvention, but maybe 3%. हाँ, ऐसा expectation है, sir. This month we can get, sir. Sorry, sir. But as of now, there no confirmation has come. No, नहीं, whether this month we can avail or not. Sir, नहीं, इस महीने नहीं मिलेगा, क्योंकि current notification was very clear that it is till 30th September. अभी जब government नया notification लेके आएगा, तब देखना पड़ेगा कि government is doing it from 1st October or it is doing it from the date when they are announcing. Respective. So till that time. Okay, one more thing, sir. Yes, sir. One more thing is that interest equalization is one part. Another part in EPC already some interest subvention is there from government. No, that is earlier 3%. So that is still there or that is not there? नहीं, दोनों नहीं है सर. मतलब दोनों को एक ही चीज बोलते हैं, पर वो दोनों ही अभी effective नहीं है. It is still September तक था वो, अभी वो effective नहीं है सर. अच्छा, तो जब अभी हम लोग ये ले रहे हैं EPC, इट मींस हम लोग का नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लगेगा जो गवर्नमेंट. हाँ जी सर. ओके, थैंक यू सर. उस केस के अंदर पे we have been suggesting to a lot of exporters that they can do a calculation
कि whether EPC is cheaper or PCFC is cheaper for आप foreign currency पे tracking credit ले या EPC पे ले, that calculation you can do for short period of time and can decide which is cheaper for आपको कौन सा cheap पड़ेगा. Okay, sure. Okay, I think you have clarified. No, thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thanks. Welcome. So we have one more person who's raised their hand, Mr. Gangadhar Mani. I think you can unmute and ask your question. Hello. Yeah. Hello. Hi. I'm Gangadhar. Good afternoon, sir. How are you? I'm fine. Good afternoon. Thanks. It was very informative, whatever you were giving. I have a small question. Recently, I was opening up a limit for FCTL and looking at how the dollars would go. If I start using that FCTL now, and depreciates later on while I pay back, it looks like a notional difference there. So, what do you suggest there? Sir, मैं और 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपको. Sure. I will ask you few questions. So that I can understand your business and then can guide you. अगर आपको in public domain पे share नहीं करना है, तो you can email. I will email the questions to you and then I can answer. आप कौन से business पे है, sir? You are into which kind of business? I am into exports of connectors, and majorly it goes to US, and that's a primary business. In fact, 75% of my revenue comes from exports, and that is why, I was looking at this FCTL where I can get a good rate of interest, and we thought, on a long run, this would be helpful for us. Sir, आपका जो export का remittance है, say example, if you are exporting 100 crore का, export, let me give you a hypothetical example. Then whether you book forwards, hedge करते हैं. Sometimes, I take spot. So, yeah, it is not a practice that I do forwards, but a small portion of it I was doing it, and I still keep doing it. When I say small portion मतलब 5-10% or? Yeah, it is just like that. Just to have a hang of that forward is what we do, but necessarily most of it I'm doing a spot. Right. आपको जो FCTL मिला है, वो approximately क्या rate पे मिला होगा, sir, आपको? This is right now 1.75 plus LIBOR. Okay. So close to 2% आपको पड़ा है. If you take INR loan, generally, what we recommend to all my clients is that they should not take foreign currency term loan. उसका logical reason ये है कि as a country, we are a net importer, ठीक है? And throughout, in the history, dollar rupee pair will depreciate, weak होगा, ठीक है? अभी आपके केस पे क्या है? आपका एग्जांपल पकड़ता हूँ, आपका 100 करोड़ का एक्सपोर्ट है, आप हेज करते हो 5%, बाकी आपका ओपन है, एग्जांपल 10% आप हेज करते हो, और आपका जो टर्म लोन होगा FCTL, उसका पूरे साल का जो पेमेंट आएगा, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट एज कंपेयर टू योर एक्सपोर्ट रिसीवेबल. तो कहीं ना कहीं आप नेचुरली हेज है, ठीक है? नेचुरली आप हेज तो है कि आपके एक्सपोर्ट के रेमिटेंस आएंगे एंड यू विल पे फ्रॉम योर एक्सपोर्ट रेमिटेंस योर FCTL लोन. नेचुरली हेज है, पर ज्यादा पैसा आप कमाएंगे इफ यू टेक INR लोन and not FCTL loan, because overall rupee जो है weak होगा. Okay. हाँ, पर अभी आप hedge है, risk नहीं है. अगर आपने ले लिया है तो आप change ना करें from term loan to INR loan, FCTL to INR loan, because the bank will again charge you ना. FCTL से INR पे जाएंगे, charge करेंगे, INR लेंगे, उस पे charge करेंगे, तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा. In your case, the risk is limited, so why to spend money? Yes. But next time, अगर आप जब भी ले रहे हैं, तब preferably you can take INR loan. That is what we suggest to all our clients.
और सर आप हेज कम करते हैं, रिक्वेस्ट करूंगा आपका हेज रेशियो को थोड़ा सा बढ़ाएं. It will definitely gonna help you. ये पर्सनल सजेशन है. If you have any issues in that, you can contact my team. Yeah, just give me your contact details. I will anyway write a mail and your team can get in touch. Definitely sir. ये अगर आप, मैंने info@crforex.in मैंने ये स्क्रीन शेयर किया, बॉटम में लिखा हुआ है info@crforex.in. मोबाइल नंबर है 9833369290. Okay, fine. I'll anyway drop a mail and then we can get in touch. Definitely sir, you're always welcome. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Yeah. So we have one more question from our audience from LinkedIn, from Mr. Rishabh Nair. So Rishabh asks, can the dollar be considered a safe haven as the Congress keeps raising the debt levels? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए लास्ट 100 साल से तो you can say that dollar is considered as a safe haven. मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है अगले 20-25 साल तक भी यही होने वाला है. Debt level is just a formality. They will keep on increasing the debt level. And economically, when हम जो MBA में जब थे, हम आज से 15-20 साल पहले, तो हमको कहते हैं अच्छा है कि US is increasing the debt level. We used to ask our teacher, क्यों? अगर US debt level को बढ़ाएगा नहीं तो US खर्चा नहीं करेगा. If US is not spending, then the entire world will go downward curve पे. So you can thank US for increasing the debt level, and अगले 15-20 साल तक तो US will be considered, dollar will be considered as a safe haven. उसके बाद का स्टोरी पता नहीं है, पर हाँ अगले 15-20 साल तक तो यही रहने वाला है. So we have one more question from our YouTube audience. This is from Bharati Singh. So Bharati asks, how to hedge for imports via banks? If you are an importer, आप दो जगह पे hedge कर सकते हैं. First thing, you can hedge in bank. Second thing, you can hedge in currency futures. Currency futures बोले तो NSE या BSE के अंदर पे. So if you want to hedge via bank, तो bank should give you a margin. A bank should give you a limit basically. जो limit किस चीज का होगा? Limit will be कि आप फॉरवर्ड बैंक के साथ में बुक कर सके, उनका आपको लिमिट देंगे बैंक. That forward limit you can get against two things. पहला, you can get against your collateral. अगर आपका कोई बोरोइंग लिमिट है पहले से तो उनका सब लिमिट कर देंगे, which is called नॉन फंड बेस्ड लिमिट. नॉन फंड बेस्ड लिमिट के अंदर पे आपको फॉरवर्ड का लिमिट मिलेगा, एंड देन यू कैन गो एंड हेज वाया योर बैंक. इफ आपका कोई लिमिट नहीं है तो आपको हेज करने के लिए बैंक को एफडी देना पड़ेगा. यू हैव टू गिव फिक्स्ड डिपॉजिट टू द बैंक. The fixed deposit will help the bank to protection. It will give a protection to the bank that if the dollar rupee pair moves from 75 to 72 level and you have booked a forward, तो उनका mark to mark loss बचाने के लिए it will give a protection. So basically, in order to conclude, you have to have a limit first. Limit आपको दो बेसिस पे मिलेंगे. एक आपके कोलेटरल के अगेंस्ट में मिलेंगे. अगर कोलेटरल नहीं है तो आपको एफडी देना पड़ेगा. आप एफडी देंगे, कोलेटरल होगा तो आप फॉरवर्ड बुक कर सकेंगे, एंड यू कैन बुक फॉरवर्ड फ्रॉम 3 days till 12 months based on your import cycle. One advice I will give to that importer, आप जब भी बैंक से फॉरवर्ड बुक करने जाए उसके पहले you should check what is the premium the bank is offering you, whether they are giving you correct kind of premiums or not. In our experience, we have seen that if the client is not aware about the exact premium, the bank might take advantage of higher premium. So you should be aware that bank आपको क्या spot charge कर रहा है, क्या premiums दे रहा है. You can get in touch with our team, and they can help you
with the current kind of premium. Let me show you कैसे आपको प्रीमियम्स पता चलेंगे. Let me show you that. ऐसा एक स्क्रीन, रॉयटर्स लिंक स्क्रीन है जहां पे आपको लाइव बेसिस पे स्पॉट एंड प्रीमियम पता चलेगा. से फॉर एग्जांपल अगर आप इंपोर्टर हैं तो 7488 का कॉस्ट रहेगा, स्पॉट रेट रहेगा. एंड इफ यू आर हेजिंग फॉर 31 जनवरी द प्रीमियम विल बी क्लोज टू 79 पैसा. और अगर आप इंपोर्टर है तो आपको आठ साइड देखना है, सॉरी 81 पैसा. सो द टोटल कॉस्ट विल कम टू 75.69. सो यू हैव टू सी टू थिंग्स. इफ यू आर हेजिंग वाया बैंक, बैंक आपको क्या स्पॉट रेट दे रहा है और बैंक आपसे क्या प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं. प्लीज वेरीफाई दैट. Okay, BBL Innovations has raised their hand again. So Yeah. You can ask your question again. You have one more. सर आप म्यूट पे है सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Okay, sir, in the same example, if I go for like we are exporter, so like you have shown example that importer that he has to pay 81 paise premium. Right. So in same example, exporter has to he will get the fixed premium, like right, in sir. other way the first right. Okay, and irrespective of money realized or not realized, he will get that premium on that particular day. Example देता हूं मैं आपको. Yes, yes, sir. If you are an exporter, if the current spot rate, let me share the screen also again, once again with you. सर अगर ये 74.87 का स्पॉट चल रहा है आज टुडे, Okay, and the sir. current premium is 79 paisa, so 75.66 is the rate, forward rate hai. When I say forward rate, it is a contract between you and the bank that on 31st January you will give bank $1 lakh and the bank will give you 75.66 ka rate on your 1 lakh remittances. That is a contract. When I say a forward booking आप कर रहे हैं, तो forward contract is a contract between you and the bank, that if you book a forward, then you are eligible to get 75.66 and a half ka rate, provided that you give $1 lakh to the bank. Okay. Okay. That पर अगर हाँ yes, अभी फिर अभी आपका क्वेश्चन आएगा, तो उस दिन अगर पैसा नहीं आया तो yes sir, yes sir, that is only. तो क्या करेंगे? If the money do not come on that day, you have to cancel your forward contract. Okay. When I say cancel your forward contract, it means that आपने जो forward contract मतलब डॉलर बेचे थे, आपको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है? So okay. on and that, on that time bank will charge. Yes sir. Yeah, आप कुछ पूछ रहे हैं, sorry. And on that day bank will charge me the opposite, उल्टा वो charge करेगा हमसे. हाँ, बैंक क्या charge करेगा? First, the bank will buy dollars on your behalf. First thing. So when they are buying dollars on your behalf, आपका आपके बैंक के साथ में एक agreement होगा कि how much interbank margin they will charge. Say 2 paisa or 3 paisa, whatever is your agreed margin. So they will charge that margin. First thing. ठीक है? Second thing, at what rate they are buying. Suppose if they are buying, suppose your export, if your forward contract is a 75 का है, क्या है अभी क्या था, sorry, 75.66 का है. The day when you are canceling the forward contract, the market rate is 75. So basically you have sold at 75.66, you are buying at 75, you are making a profit of 66 paisa. So the bank will give that 66 paisa to you. If it is reverse, okay, कि market का rate is 76.66, the bank will take 1 rupee from you. Okay, okay. And cancellation पे again एक RBI का regulation है कि whether you have booked under forward contract, under contracted basis पे किया है, anticipation के basis पे किया है, or that is altogether a different subject altogether. एक 1.5 month back we have done similar kind of an event with DRIP Capital. उसका YouTube पे वो अपलोड किया हुआ है, तो वहां पे आप रेफर कर सकते हैं कि कैंसिलेशन चार्जेस क्या होंगे,
प्री यूटिलाइजेशन चार्जेस क्या होंगे, कैंसिलेशन कौन से कंडीशन पे कर सकता है. You can view that YouTube video. And if you still have any questions, you can contact my team. My team will guide you. Yeah, sure. Thank you. Thanks a lot. Sir, आपने बहुत क्लैरिफाई किया. अरे you are always welcome, sir. हमारा काम ही यही है. और कुछ नहीं आता मेरे को, खाली यही आता है. Forex consulting. Explaining everything in a very simplistic language because this is more technical, but you are explaining a very simple way. So that's very Thank you, sir. Thank you. Thank you for your kind words. ये motivate करेगा हम लोग. Yeah, sure, sure. Mr. Pawari, so we have 2 more questions in the Q&A section. So Mr. Rajiv is asking, what are the adjustments on import intensity? Can you use EEFC account for import remittance by matching it with export remittance? हाँ, आपको ना question repeat करना पड़ेगा. The first part I was unable to understand. Sure, sir. I'll repeat it. So he's asking, what about adjustments on import intensity? Can you use EEFC account for import remittance by matching it with export remittance? Definitely कर सकते, कोई issue नहीं है उसपे. Export का पैसा, if the export money is coming, you can park in EFC account and you can pay your imports from your EFC account. There is no issues in that. You know, a lot of exporters has been asking me one question कि यार जो shipping cost है ना, वो हमारा बहुत high हो रहा है. And जो shippers होते हैं, they will give a bill of say $5,000. But they will take a rate, if the current market rate is 74, they will charge them 77. So we have suggested them that when your export remittance come, $5,000, $10,000 you keep in your EFC account and tell your shippers that they will not, you will not pay them via rupee. They have to take dollar only. So by doing that, they can save the conversion cost. 77 पे charge कर रहे हैं, 78 पे charge कर रहे हैं. And when the current market rate is 75, so they can save easily 3 rupees on their conversion. तो उसके लिए भी आप EFC account use कर सकते हैं. Okay, sir. There's one more question by Abhijit. So he's asking, what will be the USD INR rate by December 21? Are there chances of it rising to 76 or 76.50? किन्होंने पूछा ये क्वेश्चन? Someone called Mr. Abhijit. अभिजीत ने बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है. अभिजीत जी, ये ना बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. देखिए, एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते हैं कि 31 दिसंबर तक कहाँ जाएगा, पर अगर प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो आई थिंक अगले 2 महीने में dollar rupee should trade in a range between 74.10 to 75.5 level, unless and until there is some kind of a crisis where where the crude rises suddenly towards 120 130 level. अगर वो हुआ तो अलग बात है. अगर crude भी अगर stable है तो because of the inflow pressure 60-70% probability है कि dollar rupee will be in a range between 74.10 to 75.5 level. Sir, so we have someone who's raised their hand, Mansi. So, Mansi, you can unmute and ask your question. सर मिहिर बात कर रहा हूँ सर. अमित सर. सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बस एकदम फाइन. आप कैसे सर? All good, all good, all good. Sir, अभी what we are thinking of to also deal in the euro and AD currency. So it would be good to also hedge euro and AD also. नहीं, आपका एक्सपोर्ट आएगा कि सर इंपोर्ट आएगा सर? एक्सपोर्ट है सर, एक्सपोर्ट है. एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली हेज करना है सर, यूरोप का. AD मतलब what do you think, what would the market of AD, and I think today it is running between 20 rupees. So it would be done कि मतलब कभी ऊपर, what would be the volatility of it? सर AD का मैं सर देखिए, यूरो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यूरो वी हैव टू डेफिनेटली हेज. ठीक है, आपका जिस दिन ऑर्डर आए उस दिन हेज कर लीजिए.
ओके AED के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट ऐसा है कि AED USD जो है दैट इज अ पैक करेंसी, वो मोमेंटम नहीं होता है. तो वॉट एवर मोमेंटम यू आर गेटिंग इन AED INR दैट इज बिकॉज ऑफ USD INR पेयर, एंड AED USD आप हेज नहीं कर सकते, वो सेम ही है. तो आपको उस केस में भी you have to hedge USD INR. You hedge USD INR and AED USD you have to take on spot. उसको भी hedge करना चाहिए, definitely hedge करना चाहिए. At 75 level you should definitely hedge that. Okay. मतलब as expectation is there that if the USD will be rising up, then the simultaneously the AED and the euro also would be in the would be rising up to a level of the percentage of what they are rising. Sir, expectation ऐसा है कि as the dollar index will move higher, जो DXY है वो 94 लेवल से 100 लेवल पे मूव करेगा, तो जो यूरो है, यूरो USD का जो पेयर है वो नीचे आएगा. हाँ, वो नीचे आएगा. So if the euro USD is at 1.16, it might move towards 1.12 level. डॉलर रुपी हो सकता है सेम रेंज पे रहे, 75, 75.5, 76 पे. But basically, if euro is falling at a much higher pace than dollar rupee rising, then definitely euro will come down. So euro को तो completely hedge करना ही है. euro को तो कोई शक नहीं है. नहीं. Okay sir. Thank you very much. Always welcome here. So we have one more person who's raised their hand. This is Abhijit. He also had asked a question earlier. मैम, आपको मेरे को 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज करना पड़ेगा. लेट मी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन आई विल अगेन कम बैक टू यू. No problem, sir. हाँ, अभिजीत जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था. Yes, sir. So Abhijit, you can unmute yourself and ask your question. अभिजीत जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Maybe it was by mistake. I think we have one more question that someone's asked anonymously. So the question is, are we seeing a situation like the 2013 taper tantrum? Will the fragile 5 be back in picture? And how is that situation different from the current one? You know, in the presentation, I have said that इस बार का जो taper है वो without tandem होगा. When I said that, I meant that कि जो last time हुआ था वो इस टाइम नहीं होगा. उसका दो important reasons है. पहला रीजन क्या है कि the central bank of US has played a wonderful अच्छा काम किया उन्होंने क्या किया, मार्केट को प्रिपेयर किया कि हम पेपर करेंगे. So when they prepared the market, the reaction was settled. ये पहला रीजन है. Second reason is, I will give you a real life example. When in the month of March, when COVID cases were, entire country went to a lockdown. At that point of time, Nifty fallen sharply. 16,000-17,000 से 7,500 आ गया. 50% correction in just 1 month. When second lockdown came, market fallen by 5-6%. Why this change? Same था. लॉकडाउन पहले भी हुआ, बात भी हुआ, केसेस पहले भी बढ़े, बात नहीं बढ़े, लेकिन लोगों ने एक्सेप्टेंस आ गया था कि हाँ कोविड है, मार्केट गिरा, इकोनॉमी वापस से चलेगी. तो व्हेन समथिंग इज न्यू, 2013 में वो फर्स्ट टाइम था, पेपर पहली बार हुआ था, तो इसकी वजह से उसका टेंडम ज्यादा था. इस बार एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि 27% नहीं होगा, डॉलर रुपी 74 से 82 नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट करेगा. सो इन शॉर्ट, द पैनिक सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि रातों डॉलर इंडेक्स 105, 106 चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा. इट विल बी अ स्लो एंड स्टेडी मूव.
All right. So I think that's all the questions we have for today. We will end the Q&A session here because that's all the time we have for today. So thank you so much, Mr. Pabari, for sharing your knowledge with our fellow exporters. And thank you to all our viewers for joining in and participating in today's webinar. You will receive a short survey once we end the session. Request you all to share your valuable feedback and topics that you want to hear from us. It is very important for us to hear from you so that we can continue to organize knowledgeable sessions for our exporter community. You can also follow us on social media to stay in touch with DRIP Capital. You can follow our blogs and newsletter for recent trade updates and insights on foreign trade related matters. For our Zoom and LinkedIn audience, you can watch all our previous webinar videos on our YouTube channel. To subscribe to our YouTube channel, please click on the link that will be provided in the chat section. So have a great evening, everyone. Goodbye and stay safe. Thank you. Wishing you all a happy Diwali in advance. Jai Hind, Namaskar, फिर मिलेंगे.